आज केशोद तालुका में यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया है। यह यूनिटी मार्च जो है 8 किलोमीटर की थी और इस 8 किलोमीटर की यूनिटी मार्च में बीच बीच में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसके अलावा जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया उन लोगों के लिए पानी का जूस का आयोजन पर किया गया था। इस यात्रा में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जिन बच्चों ने भाग लिया था उनको पर हमने काफी सराहा है। इसके अलावा 400 से 500 लोग जो है इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े हैं, जिसमें शहरी ग्रामजन, गांव के लोगों, इन्हें सिवाय स्कूल के छात्रों, उनके टीचर्स, वालियों, पत्थर, सारे लोग जो है इस यात्रा में जुड़े हैं और यह यात्रा खूब ही श्रद्धा पूर्वक जो है की गई है। धन्यवाद। આજના કેશોદ વિધાનસભા પદયાત્રા ના ગીત રજૂ કરી અને આપણી સરકારી કુમાર શાળાની દીકરીઓએ સુંદર રીતે મહેમાનોનું સ્વાગત કર્યું। ધારાસભ્ય અરવિંદભાઈ લાડાણી, આભાર ધારાસભ્યશ્રી। હવે હું વિનંતી કરીશ ભારતીય જનતા પાર્ટી સરદાર સાહેબની 150મી જન્મ જયંતિ નિમિત્તે આયોજિત આ સરદાર યાત્રા જે છે પદયાત્રા એક સાથે લાવીને અખંડ ભારત બનાવવા જે વિવેક, ધૈર્ય, દ્રઢ નિશ્ચય જોઈએ તે માત્ર અને માત્ર લોહ પુરુષ તેમણે કહ્યું હતું આપણી સૌથી મોટી શક્તિ ભનુભાઈ ઓડેદરા, ભાજપ પ્રમુખ તાલુકા।